Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Well, students, as you know, we have started chapter number 3, and today we are going to wind up this chapter. That is comparative statements and common size statement. Okay, and we have completed in previous classes comparative statements. We have completed what we have done. Comparative balance sheet we have done. Comparative statement of P&L we have done. All right. So today we are proceeding with this common size statement. Okay. Now what do you understand by its meaning, its name, common size? Common size means something common between all. Okay. So what is the mechanism working behind this analysis? We take one common base, and that base we take revenue from operation. Revenue from operation means sales. Okay, we provide one common number, that is 100, and rest of the items we just calculate accordingly, that what percentage these another items are possessing, these another items, which percentage of the sales, which percentage of the revenue from operation they are having. Okay, for example, suppose you have 1 lakh rupees your revenue from operation. Okay, and I just assign it equal to 100, and suppose 10,000 is your another expenses, some other expenses are there. Okay, so this is equal to 100. So what about this will be equal to what percentage of that? So we have to find out the percentage of this one. Okay, so this is 10% of this, ये इसका 10% है तो उसका भी 10%. How to calculate and to do that we will understand. But this is working on this philosophy that the common base is provided to revenue from operation if we talk about the statement of P&L, and if we talk about the balance sheet, so the common base is provided to your total assets or total liabilities, so that will be equal to 100. You might have noticed regarding your balance sheet. So let's do the balance sheet first, although statement of P&L is given first in your book. Okay, so this horizontal balance sheet I am talking to make you understand. Here we do the total. This is your liability side and this is your asset side, right? The total of liability side is suppose 5,50,000, and of course assets will also be equal. Okay, so what we do, I just take this 5,50,000 is equal to 100, so automatically this will also be equal to 100. Okay, now what are the items were there? Its total was 5,50,000, and if I have converted this 5,50,000 into 100 में को मैंने base ले लिया है, so all these items will be converted into the percentage. Okay, and the total of all these items will be 100. Understood that? Means we convert the things according to the base. When the total is 5,50,000 of all these figures, and I have converted this 5,50,000 in 100 rupees or percentage, so all these we will calculate the percentage accordingly, and its total will be 100. Well, when we will do the practical question, you will understand better. Okay, so this is one of the tools and techniques of the analysis, financial statements analysis. So common size balance sheet, I'm just reading it for you. Common size balance sheet shows the percentage relation of each assets and liabilities to total assets and total liabilities, including capital, that's equity and liabilities, everything it is including. In common size balance sheet, total assets or total of equity and liability are taken as 100 in all of the amounts are expressed as a percentage of the total. Have you understood this? Means total of the assets or total of the liabilities and assets will be taken 100. So what are the objectives of common size statements? This we will read later on. Did you find something? What are the objectives? The things became very simple and it's very easy to understand. You know, we have very odd figures, 3,37,000 so and so, and all these figures are something odd and different, and it's not easy to remember. Okay, and you know, it's not easy to compare even.
but when you convert it in 100 and you find out the percentage, so that becomes very easy. Everything is covered under 100 कि ये 5 है उसका परसेंटेज, ये 10 है, ये 7% है, तो easily comparable and easily understandable by the people. So its objectives are to analyze the changes in individual items of the balance sheet. बैलेंस शीट के इंडिविजुअल आइटम्स में कोई भी चेंज होता है तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, इजीली आपको वो सारे चेंजेस समझ आ जाएंगे. दूसरा है टू सी द ट्रेंड ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी. कोई भी चेंजेस होते हैं, आपको पता है हम कंपैरेटिव वे में बनाते हैं ये, ठीक है. जैसे हमने कौन सा किया था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाया था, अभी कॉमन साइज बनाएंगे तो वो भी आपका कंपैरेटिव वे में होगा, 2 सालों का होगा, ठीक है. तो इजीली वी कैन कंपेयर कि लास्ट ईयर ये 7 था, इस बार ये 5 हो गया या 6.5 हो गया, तो स्लाइड चेंज इज देयर. देन टू एसेस द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसकी साउंडनेस को अच्छे से समझ पाते हैं एंड उस पर काम कर पाते हैं और स्ट्रेटेजीज को समझते भी हैं और बनाते भी हैं. So how to prepare that? Let's come on the next page. Well, those who are staying at home, just open page number 3.24 of your book. Here we have a format of common size statement. Everyone is having on the table? Okay. So you can see here, students, once you have crammed the format of your balance sheet, I have told you in the starting, although I have told you at the time of shares, कि वहाँ पे कर लेंगे तो वहाँ भी आपका बेनिफिट होगा, यूज आएगी. एंड हेयर ऑल्सो इन दिस बुक वी हैव टू डू. स्टिल इफ यू डिडंट लर्न द फॉर्मेट, सो प्लीज लर्न इट, बिकॉज इट्स नॉट ओनली हेयर, इन अनदर 2 chapters also this balance sheet is required and you have to understand it better. So you can see here, this is in the comparative form. 6 columns are there. The first one is of the particulars, okay. Second one is of note, and then we have the same story which we have done. First comes the previous year and then comes the current year, okay. यही पढ़ा था कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में यही किया था, पहले प्रीवियस ईयर का आएगा, उसके बाद करंट ईयर का आएगा. तो दिस इज योर फॉर्मेट. यू विल बी टेकिंग केयर कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंगली आप उसको अरेंज करेंगे. देन वी हैव द परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल. फिर आप दोनों सालों की परसेंटेज निकालेंगे. यहाँ पे आपको कंपैरिजन, आई मीन द अमाउंट यू डोंट हैव टू फाइंड आउट. यस एवरीवन, नाउ लिसन टू मी. कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, एक साल का दूसरे साल से कंपैरिजन करके जो चेंजेस आता था वो निकालते थे, फिर उस चेंज की परसेंटेज निकालते थे. तो यहाँ वो चीज़ नहीं करनी है, दिस इज टोटली डिफरेंट, ओके. वो चीज़ बस वहीं पे ख़त्म है, उसको मत लेके आना. ऑलराइट. So we have 6 columns and you can see here the liability side, equity and liabilities, the whole balance sheets format, and then we have the assets. Do you have any change in the format of balance sheet? Yes or no? Have a look. Percentage is different matter, otherwise the same, okay. Same balance sheet, Hasim. Alright. So first we take the previous year, then we take the current year. Well, let's take one illustration. Well, illustration number 17 is very small and they have taken a little headings only. So let's take illustration number 18. Yes, please. 18. Illustration 18, that's from the following balance sheet of Sun Limited as at 31st March 2020. Prepare common size balance sheet, okay. So first you have to understand the question. Yes, students, understand the question. Shareholders fund is given. Both of you please quiet. Both of you are having old book. So equity and liability, shareholders fund, look into your book. Then share capital is given, reserve and surplus is there, and then long term liabilities, long term borrowings are there, short term borrowings are there, total is there.
So I've told you the chapter is very easy. We have to cheat. सारी चीज़ें हमें कैरी करनी है. And then we have the asset side, tangible and intangible assets, inventories, cash and cash equivalents are there. All right. So let's prepare the format first. How many columns are there? 1, 2, 3, 4. This 5 and 6. This is particular note number, previous year, and this is current year. This is percentage of previous year and percentage of current year. ठीक है. Now first it is telling equities and liabilities. Which year is there? This is very important. When you start the question, so the first work should be to check that which year, what is the sequence of that, and just mark it. So always you will remember. Yes. Yes, ma'am. Okay. So we have 20, then we have 2019. So first we have a current year given, then previous year. तो हमें क्या करना है, इसको change कर लेना है. First we will be taking the previous year and then current year. Okay. So we have 60 lakh of the previous year and then current year 80 lakh. So here we have share capital. Shareholders fund में आएगा, which I didn't write. Share capital previous year में है आपका 60 lakh and then we have 80 lakh. Okay. Well, in these questions, students, first you have to note it down completely. Okay. Percentage हम बाद में calculate करेंगे, इसको पहले note down करेंगे आप. Reserves and surplus. Previous years 8 lakh and current years 12 lakh. Then we have non-current liabilities. Long-term borrowings. Previous year we have, पलक previous year का कितना है? 20. And current year? 24. We have now current liabilities, short-term borrowings. Previous years 12 and current year 4. Assets. Now we do the total. What is its total? Here it is 1 crore. And here it is 1 crore 20 lakh. Then we have assets. Are you understanding what we are doing? We are cheating. Yes, ma'am. हमने क्वेश्चन को पूरे का पूरा, ये स्टूडेंट्स है, हमें कॉपी डाउन करना है, बट बी केयरफुल ऑफ द रिगार्डिंग ईयर्स. फर्स्ट वी हैव टू टेक द प्रीवियस ईयर, देन कम्स द करेंट ईयर. ओके. सो लेट्स कॉपी डाउन द assets, non-current assets, and here we have fixed assets, and that is tangible. Previous year's tangible assets. Yes, students, tell me. Previous year's tangible assets 60 lakh. And current year 50 lakh. Then we have intangible assets. 12 lakh. Previous year 12 lakh. Current year 4 lakh. Current assets. Now we have current assets. Its inventories 20 lakh. Current year's 20 lakh. Previous year. Oh, sorry, previous year. And current year's 24 lakh. Now, cash and cash equivalents. That is 8 lakh. 8 lakh and 12 lakh. Alright. Now next is
total is 1 crore and here it is 1 crore 20 lakh. All right students, done. Now the question starts. How easy? Means everything you have to write accordingly as the question is given. Now only one thing you have to learn, how to calculate the percentage. Okay, so students, just remember, pay attention here. Yes, common size. Now I have to do what and what is its purpose behind it? आप मुझे बता सकते हैं शेयर कैपिटल कितनी है? 6 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? प्रीवियस ईयर की बात हो रही है 8 लाख. तो ये कितना इसका परसेंटेज कवर हो रहा है, क्या है? इट टेक्स अ लिटिल टाइम, इजंट इट? हम कैलकुलेट तो सभी चीज़ें कर सकते हैं, बट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नॉन करेंट लायबिलिटीज़ का क्या पार्टिसिपेशन है टोटल उसमें, सो यू टेक अ लिटिल टाइम टू थिंक कि आपकी जो टोटल लायबिलिटीज़ है उसमें इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना हिस्सा है. सो वी कैन आंसर एनीथिंग बट इट टेक्स अ टाइम. Right, so we simplify the thing and it is quite helpful for the comparison also. I have taken one common base and that is 100. Okay, तो मैंने क्या किया, ये जो है first I'm talking about the previous year, right? Previous year की liability side को मैंने क्या मान लिया, 100. And in the same way previous year's asset side is also same, इसको भी मैंने क्या मान लिया, 100. Okay, here also we will do the same thing, but let's complete the previous year first. Okay, now if my total liability is 1 crore, okay, and my share capital is 6 lakh, तो ये 1 करोड़ में 6 लाख की क्या परसेंटेज है? ठीक है, 60 नहीं है, 6 लाख यस 60 लाख है. ठीक है, तो 60 लाख है ये, इसकी क्या परसेंटेज है, किसके अकॉर्डिंग हमें देखना है? 100 के अकॉर्डिंग. जब मैंने इसको 100 मान लिया है तो वी कैन इजीली कन्वर्ट इट. ठीक है, यानी परसेंटेज निकालना, वहाँ जैसे हमने परसेंटेज निकाला था तो वही चीज़ हो जाती है. ठीक है, तो हाउ टू डू एंड व्हाट फार्मूला वी विल बी यूजिंग, देयर इज अ स्पेस टू कैलकुलेट इट्स हियर. यस, 1 करोड़ 1 करोड़ अगर आपकी टोटल लायबिलिटी है तो शेयर कैपिटल कितनी है? 60 लाख. ठीक है, अगर 1 है देन इट इज 1 करोड़, राइट? और अगर 100 हो जाती है, ठीक है, अगर ये चीज मैं 100 ले लूं तो क्या आएगा? 3 and 3 6. Okay, so this comes 60%. हासिल, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ? क्या किया मैंने, क्या किया? परसेंट निकाला है. ये नॉर्मली भी हम निकाल सकते थे कि 1 करोड़ में से 60 लाख अगर शेयर कैपिटल है तो 100 रुपये में से शेयर कैपिटल कितनी है? समझ आएगा? 1 करोड़ टोटल लायबिलिटी है जिसमें मेरी शेयर कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ में से शेयर कैपिटल 60 लाख है, तो अगर 100 रुपये मेरी टोटल लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है, 1 करोड़ लायबिलिटी में शेयर कैपिटल 60 लाख, तो 100 रुपये अगर मेरी टोटल लायबिलिटी है तो मेरी शेयर कैपिटल कितनी आती है? तो वो कितनी आती है? 60. राइट, सो दिस वे वी आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज. अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो द होल चैप्टर इज डन. And in the same way we will be doing rest of that. Well, those who did not understand the formula, they should understand what? कि जो बेस है उसको ये नीचे रखना है, इन आइटम्स को ऊपर रखना है. हासिम, समझ आ रही है बात? कि मैंने 6 लाख ऊपर रखा, देन ये वाला एंड इनटू 100, बस ऐसे करते चलना है सब आइटम्स के साथ. ठीक है, लॉजिकली 1 करोड़ में से कितना है ये? 8 लाख है ना? It's 8 lakh is your reserve and surplus out of 1 crore. Then 100 में से कितना है? It is 8%. Is that okay? Check the calculation. All right. Then we have it's 20 lakh. ठीक है? 20 लाख है, 1 करोड़ में से 20 लाख है, तो 100 में से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
20%. Okay, एंड दिस इज 12 लाख, 1 करोड़ में 12 लाख है तो 100 में से कितना हो जाएगा 12%। यहाँ पे ये सिंपल है क्योंकि यहाँ पे ये हंड्रेड्स की सीरीज में है, कोई और फिगर होती है देन इट इज़ नॉट सो सिंपल, देन यू हैव टू कैलकुलेट। इन क्वेश्चंस में सिर्फ गलती क्या होती है, कैलकुलेशन, एंड इट टेक्स अ लिटिल टाइम फॉर दैट। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए क्वेश्चन आता है कि हाउ कैलकुलेटिव यू आर एंड हाउ एक्यूरेटली यू कैलकुलेट द थिंग्स, राइट। सो जस्ट डू द टोटल स्टूडेंट्स, हेयर वी वेरीफाई द थिंग कि क्या ये सही है हमारा टोटल। इट्स 8 and 2 100, is that okay? So you verify your question then and there only that no mistake is there. इसमें परसेंटेज 100 से ऊपर जाएगी, कैसे जा सकती है, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया ना कि ये मैंने 100 के बराबर मान लिया है, जैसे आपने 100 में से ही तो निकाला, परसेंटेज कभी जा ही नहीं सकती 100 से ऊपर, ठीक है। आपके एग्जाम 500 मार्क्स में से होते हैं तो उन 500 को आप 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, कई बार 900 में से होते हैं, बहुत सारे आपकी ग्रेजुएशन के 3 सालों के वो करके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 1200 में से भी। परसेंटेज का मतलब ये है कि उसको 100 में कन्वर्ट कर देना, ओके। नाउ द सेम थिंग वी डू फॉर द asset side also. Yes please have a look. So this is what 10 लाख में से 60 लाख, then 100 में से कितना हो जाएगा, again 60. Well this question is easy, once again I'm telling you because we have the series of hundreds, then we have here 12 lakh, so this will be 12%, this is 20%, 20 lakh है, and this is 8%, right? Just do the total once again, it's 100. All right, clear? Now the point comes, yes please, now we will talk about next year. Yes, next year का कितना है, total liabilities 1 crore 20 lakh, this 1 crore 20 lakh, okay. This I have taken, I mean as a common size I have taken 100 equal to 1 crore 20 lakh, okay. It means I have taken 1 crore 20 lakh is equal to 100. Now what, these items, now just forget about this one, this year, this percentage. Do you know the another point of mistake while doing the question, Yakul? Here, when you calculate, so you take these figures, कभी ये वाला ले लेते हैं, कभी ये वाला, गलती हो जाती है, where the attention diverts, the problem takes place, right? So be attentive. Yes, how to calculate students? 1 crore 20 lakh, ठीक है। 1 crore 20 lakh में से कितना है, 80 lakh, and this comes, and out of 100 what comes, it's 200 divided by 3. This is 66.67. वो फिर आगे बढ़ता जाता है तो 5 से जो ज़्यादा होता है उसको आप राउंड ऑफ कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। Now next, it's 12 lakh. Yes, it is 12 lakh. This will be 10%. Let's see. 1 lakh. It's 12 lakh divided by 1 crore 20 lakh. Yes, it is 10%. Have you understood something? This way. So let us read this. This is your 20%, and here it is 3.3%. Just do the total, students.
This is 100. And in the same way, you will complete your asset side. Okay? And this comes 66.67, 3.33, 20% and 10%. This is also your 100. Is that clear how to do that? So common size is difficult. Okay? Don't be overconfident. Everyone thinks. लेकिन आप गलती करते हैं. Lack of practice and attention diverts. That is what we'll do. Right, students? So do all the questions of this common size balance sheet. All right.